सी एक सामान्य उद्देशीय प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे 1972 में डेनिस रिची ने बेल लैब्स में विकसित किया था। इस भाषा का उपयोग मूल रूप से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने के लिए किया गया था। सी भाषा इतनी शक्तिशाली और लचीली है कि आज भी एम्बेडेड सिस्टम, गेम डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट और माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग जैसे क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। सी एक मध्य स्तरीय भाषा है जो निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय दोनों तरह की सुविधाएं प्रदान करती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं तेज निष्पादन, पोर्टेबल कोड, मॉड्यूलर संरचना और फंक्शन आधारित प्रोग्रामिंग। सी भाषा में आप आसानी से किसी भी कार्य को संरचना के रूप में तोड़कर लिख सकते हैं, जिससे प्रबंधित करना आसान होता है। प्रत्येक सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना आवश्यक है, जो प्रोग्राम का प्रारंभिक बिंदु होता है। सी प्रोग्राम में प्रिंट एफ जैसे पूर्व निर्धारित फंक्शन का उपयोग करने के लिए हेडर फाइलें शामिल करना जरूरी है। मेन फंक्शन से प्रोग्राम शुरू होता है और रिटर्न 0 का अर्थ है कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक निष्पादित हो गया। A variable functions as a container for storing data. Each variable is defined by a name, identifier, and a type, data type. The data type specifies the kind of data the variable can hold, such as integers, decimal numbers, or characters. In C, int is a fundamental data type used to represent integers, such as 5, 3, and 100. The float data type is used for decimal numbers, providing a means to represent values like 3.14 and 2.5. Characters, such as A, B, and at, are represented using the char data type in C. C language utilizes include stdoh to incorporate standard input-output library functions. The int main function serves as the entry point for program execution in C. C supports various data types, including int for integers, float for floating point numbers, and char for characters. Arithmetic operators are symbols used to perform mathematical calculations, including addition, subtraction, multiplication, division, and modulus. Addition, yaong, combines two values. Subtraction finds the difference. Multiplication finds the product. Division finds the quotient. The modulus operator, percent, returns the remainder of a division. For example, 10% 3 equals 1. Relational operators are used for comparisons, returning either 0, false, or 1, true. The relational operators include equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, and less than or equal to. For example, if x is 5 and y is 10, x equals y results in 0, false, and x y results in 1, true. Logical operators combine multiple conditions to produce a single Boolean result. The AND operator returns true only if all conditions are true, otherwise it returns false. The OR operator returns true if at least one condition is true. It returns false only if all conditions are false. Assignment operators assign values to variables. With the direct assignment operator,
assigning the right side value to the left side variable. Compound assignment operators combine an arithmetic operation with assignment, such as hyeon, hyeak, byeaks, and percentaples. For example, n yeon 5 is equivalent to n equals n yeon 5, adding 5 to the current value of n and updating n. Increment and decrement operators increase or decrease a variable's value by 1. The increment operator, jiaong, increases the variable's value by 1. The decrement operator decreases it by 1. Pre-increment, decrement, and post-increment, decrement operators have different evaluation timings. Pre-increment, yaowang, A, increments the variable's value before using it in the expression. Post-increment, ya, on, uses the current value in the expression and then increments the variable's value. Post-decrement operators, AA, function similarly, decrementing instead of incrementing the variable.